इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। BJP MP Nishikant Dube's scathing attack on the top court. In a piercing strike, the BJP MP lashed out at the Chief Justice of India and the Supreme Court, holding them responsible for anarchy and religious war in the country. आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो। The blistering attack on the judiciary comes after the Supreme Court set a timeline for presidential nod to bills and opted for status quo on the Waqf law. The BJP, however, disapproved of the attack on the Supreme Court. BJP chief JP Nadda washed his hands off MP Dube's remark, calling it his own opinion. The little controversy has already been given a full stop by the national president of BJP, Honorable Mr. JP Nadda ji. The dignity and decorum of Supreme Court is to be maintained at any cost. The opposition called Nishikant Dube's attack a bid to lower the authority of the top court and sought contempt of court charge. नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? हमारा धर्म, आपका धर्म, इनका धर्म, उनका धर्म, धर्म में बहुत सारी बातें हैं। धर्म को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि हमें किसी एक दूसरे को ठेस नहीं पहुंचानी है। I think this cannot be taken as a lightly. One of the serious allegations has been made by a member of parliament, direct attack on judiciary. Just days ago, the top court was in the crosshairs of Vice President Jagdeep Dhankar, who slammed the Supreme Court overreach and veto power over government. The VP had also questioned the absence of an FIR in the Judge Cashall case. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. It is now over a month. Even if it is can of worms, time to blow up the can. While the executive versus judiciary tussle isn't new, the growing acrimony points to a never-before escalation. Can Indian democracy afford this growing divide between its key pillars? If you like the video, do like, comment, share and subscribe.